Hello everyone, welcome to my channel The Social Science Academy. In this video, we are going to study chapter number 2 from NCERT book of Geography for class 6. The name of lesson is Globe and Latitude. What is mean by globe? Globe is a true model of the earth. As we know, our planet earth is not a sphere. It is slightly flattened at north and the south pole. नॉर्थ एंड साउथ पोल पे स्लाइटली फ्लैटन है, ये पूरा का पूरा स्फीयर नहीं है. सो ग्लोब इट इज़ अ ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ इन अ मिनिएचर फॉर्म. हमारे अर्थ का जो शेप है वो हम क्या कर सकते हैं, ग्लोब से हम देख सकते हैं. ओके, इट इज़ इन अ मिनिएचर फॉर्म, छोटे फॉर्म में हमें क्या करता है, ग्लोब हमारा अर्थ रिप्रेजेंट करता है. ग्लोब्स में बी वेरिंग साइज एंड टाइप, अलग साइज में देख सकते हैं, अलग टाइप्स में होते हैं. बिग ग्लोब्स होते हैं, पॉकेट ग्लोब्स होते हैं, ग्लोब बलून की तरह भी होते हैं. सो डिफरेंट इन डिफरेंट साइजेस एंड इन डिफरेंट टाइप्स वी कैन सी द ग्लोब्स. देन विच काइंड ऑफ information we get it from the globe? On the globe the countries, continents and oceans are shown in their correct sizes. okay, उनके करेक्ट साइज में कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स और ओशियंस जो है ये कहाँ पे हमें ग्लोब पे दिखाई देते हैं, शो किए होते हैं उनके करेक्ट साइजेस में. नाउ एज वी नो it is not possible on that spherical shape to find out any place, to locate any place. okay, for that purpose we have to know some of the things like axes, latitudes, longitudes. ये चीज़ें हमें रेफरेंस पॉइंट्स फाइंड आउट करने के लिए चाहिए होती है. सो फर्स्ट वी विल सी व्हाट इज एक्सिस एंड द पोल्स. नाउ अर्थ रोटेट्स अराउंड द इमेजिनरी लाइन. ये इमेजिनरी लाइन है, अगर हम ग्लोब देखेंगे तो उसके बीच में एक निडल फिक्स किया होता है एंड दिस ग्लोब रोटेट्स अराउंड द needle. So like that way we consider that our earth also rotates around the imaginary line, that is called the axis of the earth. Now the two ends, there are the two ends on the globe, the needle it passes. okay, so these two ends, the axis of the earth on which it rotates has two end points. दो end points है. okay, these points are called the poles. ये जो दो points है हमने कंसीडर किया है कि इमेजिनरी लाइन के अराउंड अर्थ रोटेट होता है, तो उसके जो दो points हैं these are called the poles. The point at the top is called the north pole and the point at the bottom is called the साउथ पोल. जो नॉर्थ की तरफ है वो नॉर्थ पोल एंड जो साउथ की तरफ है वो कौन सा है, साउथ पोल है. देन विल सी द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड. दीज आर आल्सो द इमेजिनरी लाइंस दैट वी हैव लोकेटेड टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ द प्लेसेस. सो व्हाट आर द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड? दीज आर द फुल सर्कल्स विच रन्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. ईस्ट से वेस्ट की तरफ ये जो फुल सर्कल्स है वो दिखाई देते हैं. यू कैन सी इन द डायग्राम ऑल्सो एंड दीज आर पैरेलल टू वन अनदर. These are called the parallels of latitude. The equator is the largest parallel marked as a 0 degree. Exactly from the middle which parallel it is passes, that is the equator. It is the largest parallel. Why it is the largest parallel? Because however the parallels of latitudes this moves towards the pole, the size it decreases. जैसे जैसे इक्वेटर से पोल की तरफ ये पैरेलल्स मूव होते हैं, जाते हैं, वैसे वैसे उनकी साइज क्या होती है, डिक्रीज होती रहती है. बिकॉज दीज आर द पैरेलल सर्कल्स टू ईच अदर. देन इक्वेटर डिवाइड्स आवर अर्थ इनटू टू इक्वल पार्ट्स. द नॉर्दर्न पार्ट इज नोन एज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द साउदर्न पार्ट इज नोन एज द साउदर्न हेमिस्फीयर. नॉर्थ के बाजू में जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द साउथ पार्ट टुवर्ड्स द इक्वेटर इट इज द साउदर्न हेमिस्फीयर. The latitudes are numbered from 0 degree to 90 degree in both the hemisphere. 0 degree it is the equator. Then towards in the both the hemispheres, in the northern hemisphere up to the 90 degree and in the southern hemisphere up to the 90 degree. So there are 180 degree parallels. कितने हैं दोनों हेमिस्फीयर की मिला के 90 180 parallels है. Each latitude indicates by the letter N or S.
In the northern hemisphere, the latitudes, these are indicated by the letter N, and the latitudes which are present in the southern hemisphere, these are indicated by the letter S. Then from these parallels of latitude, there are some of the parallels of latitude which are very important. Which are those? 0 degree, that is the equator. Then in the northern hemisphere at 23.5 degree, that is there is a tropic of Cancer. Then 66.5 degree, there is the Arctic Circle. These are the two important parallels of latitude in the northern hemisphere. Then we'll come to the southern hemisphere. 23.5 degree, there is a tropic of Capricorn, and 66.5 degree, there is a Antarctic Circle. These are the two important parallels of latitude. These are present in the southern hemisphere. So there are total 5 important parallels of latitude, including the equator. Now, according to them, it is divided into the different heat zones, okay, which is related to these parallels of latitude. Now, there are the heat zones of the earth. You can see here in the diagram, the area which lies between the 23.5 degree north up to the 23.5 degree south, it is a torrid zone. There are total 3 heat zones, that is torrid zone, temperate zone, and the frigid zone. Then the next it comes the temperate zone, north temperate zone and the south temperate zone. The area which is from the Tropic of Cancer up to the Arctic Circle, it is the north temperate zone, and the area that is from the Tropic of Capricorn up to the Arctic Circle, it comes under the south temperate zone. And the area from the Arctic Circle to the North Pole, that is the frigid zone, and the area which is the Arctic Circle up to the South Pole, that is the frigid zone. Okay, पोल के जो नियर है, okay, near to the poles, both the poles, these are the frigid zone. Okay, so there are the total 3 heat zones: torrid zone, temperate zone, and the frigid zone. Now, as I told you, there are the reference points that we have to find to locate the places, but only the latitudes are not enough to find out the places. So we need another reference, we need another imaginary lines, that is the longitude. So what is the longitudes? These are the semicircles which join the North Pole and South Pole, and running from north to south are called the meridians of longitudes. Now see, the latitudes, these are the full circles, but the longitudes, these are the semicircles. कहाँ से? नॉर्थ पोल की तरफ से साउथ पोल की तरफ आते हैं. These are the semicircles. The meridian passing through Greenwich is marked as 0 डिग्री. जैसे इक्वेटर है 0 डिग्री पे, वैसे ही जो 0 डिग्री पे ग्रीनविच में प्लेस से जो पास होती है मेरिडियन, इट इज मार्क्ड एज 0 डिग्री, एंड दिस इज कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन. इसे क्या बोलते हैं? प्राइम मेरिडियन एट अ 0 डिग्री. Area lying to the east to the prime meridian is called the eastern hemisphere, and the area lying to the west is called the western hemisphere. East वाला area eastern hemisphere, west वाला area western hemisphere. किसके east और west से? prime meridian के east और west पे. There are 360 degree meridians of equal length. ये सेमी सर्कल्स है नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ आने वाले, ठीक है. So these are equal length, these are of equal length. ये parallel circles नहीं है, ये क्या है? सेमी सर्कल्स है जो पोल नॉर्थ पोल की तरफ से साउथ पोल को ज्वाइन होते हैं. So these are of equal length. All the meridians, these are of equal length. How many meridians are there? 360 are there. Okay, so eastern hemisphere में 180, western hemisphere में 180. So total these are the 360 degree meridians of equal length. But the distance between these meridians, it decreases. दो meridians में distance कैसे decrease होता है? When they pass move towards the poles. पोल की तरफ जब मूव होते हैं तब उनमें जो डिस्टेंस है वो क्या है? डिक्रीज होता रहता है, ठीक है. टिल
इट बिकम्स द जीरो एट द पोल्स. ओके, पोल की तरफ पोल पे वो एक दूसरे को मिल जाते हैं. ओके, दे मीट इट with each other to the pole at the 0 degree. Okay, and the distance between the two meridians, it decreases towards the pole, but all the meridians are of equal size. Each meridian indicates by the letter E or W. The meridians which are in the eastern hemisphere, these are indicated by the letter E, and the meridians which are in the western hemisphere, these indicates by the letter W. Now, longitudes are very important for calculating the time. Okay, so there is a relation between longitude and the time. Longitude and time are very related to each other, and its very best mean for measuring time is by the movement of the earth, the moon and the planets. Okay, जैसे अर्थ, प्लैनेट्स और मून का मूवमेंट होता है उसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ वी नो दैट अर्थ रोटेट्स. ओके, टू कंप्लीट वन रोटेशन इट टेक्स 24 आवर्स. 24 आवर्स लगते हैं अर्थ का रोटेशन कंप्लीट होने के लिए. इट मीन्स दैट 360 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स है कि नहीं, 360 डिग्री है लॉन्गिट्यूड्स. सो 360 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स इज इक्वल्स टू 24 आवर्स. वन रोटेशन मतलब 360 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स. सो हमें कितना लगता है, 24 आवर्स लगता है. उसके हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 1 डिग्री के लिए कितना आता है, 4 मिनट्स. ओके, so in each and every longitude there is a difference of 4 minutes. 1 degree 4 minutes, 2 degree 8 minutes, then 3 degree 12 minutes. okay, ऐसे क्या होता है, डिफरेंस 4 मिनट्स का है ईच डिग्री में. 360 डिग्रीज में ईच डिग्री में कितने मिनट्स का डिफरेंस है, 4 मिनट्स का. नाउ एज द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. अभी देखो हम कहाँ से कैलकुलेट करते हैं, 0 डिग्री मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन विच पासेस थ्रू द ग्रीनविच. ओके, तो हर एक मतलब 180 डिग्री ईस्ट में है, 180 डिग्री वेस्ट में है. ओके, सो एज द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, दोज प्लेसेस ईस्ट ऑफ ग्रीनविच, ग्रीनविच के ईस्ट में जो प्लेसेस है विल बी अहेड ऑफ ग्रीनविच. उनका टाइम क्या होगा, ग्रीनविच का जो टाइम है उससे आगे होगा. ठीक है, और जो वेस्ट हेमिस्फीयर में है, जो वेस्ट में है ग्रीनविच के, उनका टाइम क्या होगा, ग्रीनविच से पीछे होगा. ओके, एंड दोज टू वेस्ट विल बी बिहाइंड टू इट. जो ईस्ट में प्लेसेस है ग्रीनविच से, उनका टाइम क्या होगा, आगे होगा. कैसे आगे होगा, 1 डिग्री 4 मिनट, 2 डिग्री 8 मिनट. तो जैसे जैसे अप टू द 180 डिग्री तक 4 मिनट के डिफरेंस से जाएगा, आगे जाएगा, प्लस में जाएगा, और पीछे वेस्ट में क्या होगा, माइनस में जाएगा. ठीक है, सो टू अंडरस्टैंड इट बेटर I will take one example. I will show you the example. What we have to find out, see, we have to find out the time of the place which are located at 15 degree east and 15 degree west from the Greenwich. Greenwich से हमें मीन टाइम किसका कंसिडर करना है, ग्रीनविच का. 15 डिग्री ईस्ट में, 15 डिग्री वेस्ट में. द टाइम एट ग्रीनविच एज 2 PM. ग्रीनविच का टाइम कितना कंसिडर करना, हमें 2 PM कंसिडर किया है. उसके हिसाब से 15 डिग्री ईस्ट और 15 डिग्री वेस्ट में कितना टाइम होगा, द प्लेसेस विच कम्स ऑन दीज लॉन्गिट्यूड्स. ओके, कितना टाइम होगा. फर्स्ट वी विल सी द टाइम ऑफ प्लेस एट 15 डिग्री ईस्ट. नाउ एज वी नो 1 डिग्री ईस्ट इज इक्वल्स टू प्लस 4 मिनट्स. ईस्ट की तरफ है मतलब टाइम क्या है, अहेड है. ओके, मतलब आगे है, हमें प्लस में लेना है. देन 15 डिग्री ईस्ट इक्वल्स टू हाउ मच इट विल कम, प्लस 60 मिनट्स. 15 इंटू 4, 15 डिग्री है मतलब 15 इंटू 4 किया हमने. सो हाउ मेनी मिनट्स, 60 मिनट्स. सो 60 मिनट्स इट मीन्स 1 आवर. तो कितना होगा, 2 PM है, उसमें 1 आवर एक्स्ट्रा अहेड है. क्यों, क्योंकि ईस्ट में है. सो 3 PM. तो कितना होगा टाइम, जितने भी प्लेसेस 15 डिग्री ईस्ट पे आते हैं उन सभी प्लेसेस का टाइम कितना होगा, 3 PM. ठीक है, कब, जब ग्रीनविच में 2 PM होगा. ओके, ग्रीनविच मतलब प्राइम मेरिडियन के प्लेसेस जो है वहाँ का टाइम जब 2 PM है. ठीक है, देन द नेक्स्ट
At the west, time of the place at 15 degree west. Now see 1 degree west, it means -4 minutes बिहाइंड होगा. वेस्ट वाले जो प्लेसेस है वहां पे क्या होगा, पीछे जाएगा, कम होगा 4 मिनट्स के डिफरेंस से. सो 15 डिग्री वेस्ट में -60 मिनट्स होगा, है कि नहीं. 15 इंटू -4 that is -60 minutes. 60 minutes is means 1 hour. It means we have to do 2 PM से 1 hour हमें क्या करना है, 60 minutes हमें कम करना है. इट मीन्स द टाइम इट विल बी 1 PM. कितना होगा, 1 PM होगा. कहाँ पे, वेस्ट वाले प्लेस पे. 15 डिग्री वेस्ट में जो प्लेसेस वहाँ पे लोकेटेड है वहाँ पे टाइमिंग कितना होगा, 1 PM. ओके, नाउ टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, हैव यू गॉट इट द कंसेप्ट और नॉट. अगर आपको समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है. देन वी विल सी अबाउट द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम. व्हाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम, हमें स्टैंडर्ड टाइम क्यों होता है. सी इट इज़ अ ग्रीनविच मीन टाइम, हम तो कंसिडर करते हैं. ओके, बट सो मेनी कंट्रीज आर देयर इन द वर्ल्ड, दे हैव अ लॉन्गेस्ट एक्सटेंट. ओके, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट उनका बहुत बड़ा है. सो फॉर दैट पर्पज इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर देम to consider a Greenwich time. Same here, our country also considers the Indian Standard Time. Okay, हमारे देश में भी क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है. इन इंडिया द लॉन्गिट्यूड ऑफ 82.5 डिग्री ईस्ट इज ट्रीटेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन. ये जो लॉन्गिट्यूड है वो हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड मेरिडियन कंसिडर करते हैं. The local time at this meridian is taken as the standard time for the whole country. Now how the time it is considered as a Greenwich. Greenwich का जैसे टाइम कंसिडर किया जाता है स्टैंडर्ड टाइम, वैसे ही हमारे कंट्री में होल कंट्री के लिए इस मेरिडियन का जो टाइम है वो स्टैंडर्ड टाइम कंसिडर करते. कौन से मेरिडियन, 82.5 डिग्री ईस्ट. ओके, देन इट इज नोन एज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, IST. इसको ही क्या बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम. ओके, दैट वी कंसीडर हाउ वी कंसीडर कंसिडरिंग द 82.5 डिग्री ईस्ट जो है मेरिडियन, वहाँ पे जो टाइमिंग है वो हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड टाइम कंसिडर करते हैं. ओके, आई होप यू हैव लाइक्ड माई वीडियो. देन लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल and press the bell icon. It means you will get the notification of every uploaded video. Thank you.